Okay, we're live. Hello, good afternoon, and welcome back to the Law Intense YouTube channel and to another session of the Hindu analysis. My name is Govind Singh. Today is 9th of January, and we are ready to begin. How many of you are here with me live watching this session? Please give me some responses in the chat box, and then we shall begin. Ashnur is here. Good afternoon. Okay, we'll wait for a minute or so that more people can join in, and then we shall begin our class for the day. All right. So today is 9th of January. We were discussing yesterday that we celebrate a particular day today. Can you guys tell me what day do we celebrate on 9th of January? We were discussing this in yesterday's class in quite detail, that किसके significance या किसकी memory में 9th January celebrated, what is the significance of the day, who's going to be the chief guest of this particular day, where is it being celebrated. Yes, we are talking about the Pravasi Bharatiya Divas, as Agastya and Arshnur have rightly mentioned. So 9th of January, Pravasi Bharatiya Divas, celebrated in Odisha this particular year. And who's going to be the chief guest? The president of Trinidad and Tobago. Can you guys give me the name of the lady? Yes, Gandhiji returned to India that day in the year 1915. That's correct. कल क्लास में हमने नाम याद किया था, चीफ गेस्ट ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस. How many of you remember that? Can you guys tell me the name? Agastya is here, Tenma is here, K-pop is here, Swarangi is here, Satviki is here. Welcome to the class, guys. Christine Kangaloo is the right answer, absolutely correct. टेनमा ने मुझे सबसे पहले आंसर दे दिया है. क्रिस्टीन कार्ला कैंगलू इज द फुल नेम. दैट्स करेक्ट. ऑलराइट, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट एनी फर्दर अडू. लेट्स बिगिन. I hope I'm audible and visible to all of you. I hope my screen is visible to all of you. And we are ready to start. So let's look at the agenda for the day and then we'll look at our newspaper overview for the day. Let's begin. So many articles to discuss today. Let's look at what do we have. First is CEC and EC appointment. What do we mean by CEC? CEC is your Chief Election Commissioner and EC are the other election commissioners. Just a moment, guys. Okay, so Ashnur has a question. When are we starting Menti Quiz? We are going to start Menti Quiz probably by the next week. I hope we have more numbers by then. So it's on you guys. Invite more friends to the stream and we'll start it as soon as possible. Coming back to our agenda, so we'll talk about the CEC and EC appointment very soon when we discuss them in detail. Why is this in question? Because this is where the legislation and the judiciary are at, you could say, at a tussle, where the legislation is trying to bring in ordinance which can give it more control over the appointment of the chief election commissioners. On the other hand, the court wants to exercise its authority over it. So we'll discuss this particular debate, whether the legislation should prevail or the judiciary should prevail, and we'll see how it works. The second topic for the day is the river interlinking project. Although we have discussed this in one of our previous analysis as well, but because there's an editorial article in today's newspaper, let's revisit this. Which river interlinking are we talking about? Can anyone of you guess this? This is going to be the first major river interlinking project in India. Which two rivers am I talking about? These rivers are in the UP-MP region, the Bundelkhand region. Can you guys tell me the name of the project in the chat box? The next topic of the day is right to food. There's an interesting article in today's newspaper on right to food as well as the PDS scheme, the public distribution scheme. So we'll talk about that. Then we have the UAPA. इस पे भी एक अच्छा article है, Unlawful Activities Prevention Act. This is because recently the bail application of people accused in the 2020 Delhi riots case, जिसको हम कहते हैं, जिसमें Umar Khalid and all of those were accused, तो उनकी bail application has been bail application has been rejected by the court. So उस बारे में हम बात करेंगे. And then the final article is going to be about China's game in Africa. What exactly is China doing in Africa, which is increasing its dominance, increasing its diplomacy with the African countries?
And of course, last and not the least, we'll be doing our vocabulary for the day. But before all of this, we'll do a very quick newspaper analysis. Kane Betwa project is the right answer. Absolutely correct. चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर द डे सो आई जस्ट क्विकली शेयर द न्यूज़पेपर विद यू ऑल Okay, I hope the newspaper is visible to everyone. So, this is today's edition of the Hindu, 9th January. The front page news says 6 killed, 20 hurt in Tirupati stampede. Tirupati temple is in which Indian state? Can you guys tell me very quickly? कहाँ पे है तिरुपति टेम्पल? यहाँ पे एक स्टैम्पीड हो गई थी। स्टैम्पीड समझते हो आप लोग? भगदड़ मच जाना, एकदम अफरा तफरी, जिसमें लोग दब जाते हैं, पिचक जाते हैं, मर जाते हैं। काफी सैड इंसिडेंट, काफी ट्रैजिक, बट या दिस इज क्वाइट frequently seen in large public gatherings, especially religious gatherings in India. Andhra Pradesh is the right answer. Andhra Pradesh में है. Jostling is धक्का मुक्की. Stampede is more of a bhagdad mat jana to a very great scale, where there's usually a lot of people who are injured and some of them also lose their lives. Okay, the next piece of news is data rules to be rolled out by mid 2025, says Vaishnav. Who's Vaishnav? Ashwini Vaishnav is our union minister for, you could say, IT and data protection. And which legislation are we talking about? We are talking about the digital personal data protection rules, which are currently in a ड्राफ्ट फॉर्मेट. अभी उसकी ड्राफ्टिंग चल रही है, अभी उसकी प्लानिंग चल रही है, एंड फिर ड्राफ्ट रूल्स रिलीज होंगे इन द मिडल ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर, which would govern how your data is being used. Your data is would be protected or processed by different companies, different firms. So it would be very interesting as a legal development in the country's legal framework. So we'll definitely have a look at that. And this is an important thing which you have to keep an eye on. Okay, moving ahead, what do we have? Simultaneous elections, MPs on house. This is not important. Centers move to replace post of advisor to Chandigarh administrator with chief secretary sparks row in Punjab. Now, why is that? That is because Chandigarh as a city has always been controversial between the states of Punjab and Haryana. Both of them assert that their claim on Chandigarh is more valid and more, legitimate. Punjab government thinks that if the post of advisor is replaced by chief secretary, this would reduce the proximity of Chandigarh to Punjab, because chief secretary jo post hoti hai, that is usually a post which exists in a state, but Chandigarh is not a state. Chandigarh is a union territory which serves as a capital of both Punjab and Haryana, the only city or the union territory to serve as capital of two different states. So इस वजह से unanimously all the political parties in Punjab, be it the Aam Aadmi Party, be it the Congress, be it the Shiromani Akali Dal, are opposing this move by the center. And let's see what happens. Then on the right hand side, forecast for 23 Delhi floods was inaccurate as flow of Yamuna was marred by silt and muck, says center to NGT. NGT is what? National Green Tribunal, which is responsible for all your environment related cases. Okay, moving ahead. Congress unveils second poll guarantee promises 25. Okay, this is city-based news, not that important. This is related to this Delhi Assembly poll elections, which are going to happen very soon. Atishi seeks meeting with Chief Election Commissioner over electoral roll. We can skip this, all of this. Not that important for us. Okay. Now we are on state-based news. Modi launches projects worth 2 lakh crore on first Andhra trip since Lok Sabha poll. So here you can see him with the Chief Minister Chandrababu Naidu and with the Deputy CM Pawan Kalyan in a roadshow. And he has launched multiple schemes, multiple initiatives. So yeah, that's pretty much it. Competitive exam के लिए important नहीं है. Border fencing on in West Bengal despite BGB objections. What is BGP? बांग्लादेश का एक तरीके से आप BSF कह सकते हो. Border Guard बांग्लादेश इसकी full form होती है. तो उन्होंने oppose किया था border fencing को, but हमने अभी भी border fencing लगा के रखी है across the West Bengal border. Moving ahead, investment proposals, no mercy, not important for us. Atrocity complaints, not important for us.
Center yet to wake up from its slumber on Dam Safety Act. What is slumber? Slumber essentially means deep sleep. So center is still sleeping, says the Supreme Court. And this is in context with a plea seeking lowering of the permissible water levels of the Mulla Periyar Dam. Where is the Mulla Periyar Dam? This is in Kerala. Anything which has the word Periyar in it, you can assume that it is in Kerala because the region, Periyar region is in Kerala. Periyar Wildlife Sanctuary is also in Kerala. So about that particular डैम सेफ्टी पे जो एक्ट है उस पे सेंटर बहुत स्लोली काम कर रही है and that is what the Supreme Court has objected upon. Okay, moving ahead. Okay, now we are down to the editorial section, the most important part of a newspaper from a competitive POV. And the first article is about river interlinking, which we were just talking about. The fount of environmental disaster, the foundation of environmental disaster, the root of environmental disaster, and why is this being said so? We'll talk about this in a little more detail when we come back to our analysis. But here we are talking about the Kane Betwa link project, which has been approved. The foundation stone has been laid by Modi ji, and this is going to be the first major river linking project, which would be in the region of UP MP border area. And why this is being criticized, or why this is being termed as something which is detrimental to the environment, is because it passes through a major national park or tiger reserve, which is the Panna Tiger Reserve in MP. And that is a major cause for environmental degradation of a very ecologically sensitive zone. Not just that, river interlinking project would also cause uprooting of a lot of families from their respective homes. So a lot of displacement would happen, a lot of deforestation would happen, a lot of destruction of habitat would happen. So there are a lot of environmental repercussions of such a development project, but we'll look at everything around it when we do the analysis. Moving ahead, we have the right to food and the struggle with the PDS. PDS is the public distribution system or scheme, and system essentially, not scheme, public distribution system, which basically is an initiative to give very affordable or free grains to the, you could say, disadvantaged population, the population which is below the poverty line. So we're talking about how the right to food exists and how PDS system is struggling in a lot of states, how there are multiple challenges in the implementation of the PDS system, and what are the possible causes behind this obstacle, and what can be the possible solutions. So that is what this article is about. This guy was my fifth year senior in Nalsar. So another article by a Nalsar senior in the newspaper. I keep on seeing articles by my college seniors in the newspaper, which is quite good. Maybe I'll also submit an article someday. Anyway, not going off tangent, let's move on to the next opinion piece. Acha, यहाँ पे on the left hand side, one of this is about the GDP growth, which we have discussed already. So इसलिए we are not going on this again. And this is about governments are discouraging exercise to right to information. This also we have discussed yesterday. So ये दोनों article, ये दोनों ideas और ये दोनों topics हम कल के analysis में कर चुके हैं. That is why I'm not spending more time on this once again. The next opinion piece on the left hand side is China's long game in Africa. Now, this is in context with China setting up its first political training school in Tanzania in 2022, and how, after that particular incident, they are starting to mobilize African countries in line with how Chinese diplomacy works, how Chinese organizations work, how Chinese government systems work, so that they can bring the African nations closer to how China operates, how they can exercise control over the diplomacy of that African continent. There are multiple facets to it. There are multiple ways in which they are taking this particular initiative forward, and we'll discuss all about that when we do the analysis of this article. Moving ahead, center share in states revenue has surged in the last decade. This is not that important for us. It's just numbers and statistics. Then why is deciphering the Indus script important? So Indus script essentially is the script from the Indus Valley civilization, the Harappan civilization, Harappa, Mesopotamia, not Mesopotamia, sorry, Mohenjo-daro, Lothal, all of these were important Harappan Valley sites, Indus Valley sites.
And the Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has announced a $1 million prize, which is roughly around 8.5 crore rupees, to anyone who deciphers, that means decodes the scripts of the Indus Valley civilization. So you can see there is a bull sort of a figure here, and above it is written something which we can't understand what exactly is written here. So you have to decode this. We have to decode this particular script. So if any one of you are interested in all of these things, maybe you can take a shot. Maybe you can win this 8.5 crore prize. But yes, this is what the article is about. So we'll just go through the gist of this article. There's no need for in-depth analysis for this one. Let's read the gist. The IVC, that means the Indus Valley Civilization, also called the Harappan Civilization, spanned 2,000 sites across 1.5 million this kilometer in territories of modern-day India, Pakistan, Afghanistan in the Bronze Age. It had wider geographical area than combined areas of contemporary civilization. That means उस time की जो दूसरी civilizations थी, Egyptian and Mesopotamian, commissioned by Tamil Nadu government's archaeology department. Study in which is morphological in nature reveals that 90% of graffiti marks found during excavations have parallels to those found in Indus Valley civilization. Document goes on to state that the occurrence of a large number of carnelian and agate beads and high tin bronze objects, particularly from Iron Age graves, give a clue about the contact, as carnelian, agate, copper, and tin. These are all different types of metals, have to come from the north or elsewhere. So that is what this article is about. ये कह रहे हैं कि जो तमिलनाडु में excavations में चीजें मिल रही हैं वो similar हैं to what was found in the Indus Valley civilization का excavation. And we need to decode the skip to understand the link. Then we have an article on the UAPA, the Unlawful Activities Prevention Act, a draconian law. Why is it being called a draconian law? Draconian means a very bad law, a very exploitative law, a very rigid law, a very evil law, to put it rightly, is wrecking lives. How is it wrecking lives? क्योंकि bail मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है in cases of UAPA. And the case in point is the case of Omar Khalid, whose bail was recently denied. And this is an article by Gautam Bhatia, who's a prolific writer on the field of cyber law, constitutional law. So we'll see what this article is all about. Moving ahead, quiz to mark the 18th edition of Pravasi Bharatiya Divas being held in Bhubaneswar. Identify this former president and premier of African nation who was the first chief guest in 2003. Remember, I was telling you guys कि प्रवासी भारतीय दिवस हमने celebrate करना start किया from the year 2003. And किस साल से हमने ये decide किया कि we would just celebrate this once every 2 years? What was that year? Can you guys tell me in the chat box? Since which year are we celebrating the प्रवासी भारतीय दिवस once in every 2 years? 2003 से तो हम हर साल celebrate करते थे. 2015 is the correct answer. Absolutely right. Agastya has given me the right answer. So this gentleman's name is Sir Anirudh Jagannath, and he was the president of Mauritius. जिनकी आपको फोटो दिख रही है, he was the first chief guest. Mauritius के president थे अनिरुद्ध जगन्नाथ. And अभी वाले तो हमें पता ही है कौन है, हमने discuss कर लिया. Now, next is, as ISRO Chief V. Narayanan will have to hit the ground running. We discussed about him yesterday that he's going to be the new ISRO Chief, replacing Dr. S. Somnath. And yeah, that's pretty much about it. Okay, moving ahead. Do we have anything interesting here? India ready to support Maldives in enhancing its defense preparedness, since Rajnath Singh. Sambal Mosque case, High Court seeks reply from government and Archaeological Survey of India. Okay. Okay, this is an interesting one which we'll take up. Supreme Court to take up pleas challenging Chief Election Commissioner and Election Commissioner appointment law in February. So Chief Election Commissioner Rajiv Kumar was retired recently, and अब देखना है कि कैसे अपॉइंटमेंट होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का. So एक 3 जज की बेंच बनाई गई है by Justice Suryakant being the head of the bench, along with Justice Dipankar Datta and KV Vishwanath, who would be listening this particular plea, which talks about whether the legislation would have the final authority or say over appointment of chief election commissioner, or the Supreme Court would have the final authority as per Article 141 of the Constitution. So इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे. Coming back to the newspaper, let's see if we have anything else. India balancing on twin pillars of technology and tradition.
Okay, okay, nothing interesting here. Hmm, 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 hmm. Homes destroyed, thousands flee as wildfires tear through Los Angeles. Okay. India's Misri meets Taliban's foreign minister in Dubai. Who's Misri? Vikram Misri is our foreign secretary. Foreign Minister is Dr. Jaishankar. Foreign Secretary is Mr. Vikram Sikri, and he has met the Talibani counterpart, Taliban ke Foreign Minister, Mr. Mavlavi Amir Khan Mutaki in Dubai, and they have discussed the bilateral relationships. And basically, इसमें बात ये हुई थी कि कैसे they would be using the Chabahar port in Iran for facilitating trade between India, Afghanistan, Iran, and all of those countries. ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं. फ्रांस asks Europe to brace itself against Musk interference. Denmark is open to dialogue with US. Anything interesting in the sports section? Not really. Okay, so that's pretty much about the overview of today's newspaper. Let's talk about the three, four articles which we identified in a little more detail. So let's go back to our presentation and let's talk about them थोड़ा सा डिटेल में. Just give me a moment, guys. Yeah. Okay. I hope the screen is visible to everyone on the slideshow. Chief Election Commissioner and EC appointment is our first article. तो अभी जैसा we were discussing that the Chief Election Commissioner previously was Rajiv Kumar and his retirement has brought back the focus of the court कि अब जो है अपॉइंटमेंट जो होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वो कैसे होगा. तो मैं आपको बता रहा था 3 जजेस की ये बेंच बनी है which would decide that whether it would be the court's binding authority under Article 141 and whether the legislature can circumvent this particular authority of the court by passing an ordinance. You guys understand what is an ordinance? Ordinance is a little bit different from a bill or a law in the sense that an ordinance can be passed without taking the approval of the entire house, just by using the authority of the legislature or the executive. And कोर्ट का इस पे ऑब्जेक्शन ये है कि इसके थ्रू आप कोर्ट का जो डिसीजन है उसको बाईपास कर रहे हो एंड कोर्ट की जो अथॉरिटी है इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ लॉ उसको आप सर्कमवेंट करके दूसरा एक तरीके से लूप होल निकाल रहे हो, लीगल लूप होल वेयर यू आर exploiting the law making authority of the parliament. And ये petition पे challenge हुआ है as per article नहीं sorry section 7 clause 1 of the election commissioner act of 2023. So आपको एक्ट का नाम पता होना चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट ऑफ 2023. सो इसका जो क्लॉज सेक्शन 7 क्लॉज 1 है उस पे अपील फाइल हुई है एंड यही अब कोर्ट को डिसाइड करना है कि वेदर द प्रेसिडेंट वुड अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर्स ऑन द रिकमेंडेशन. अच्छा, अभी जो प्रोसेस है पहले मैं वो बता देता हूँ आपको. तो जो करंट स्टेटस को है, जो प्रोसेस ये है कि द प्रेसिडेंट appoints the chief election commissioner and the election commissioners on the recommendations of a selection committee. अब इस सिलेक्शन कमिटी में कौन होता है? इस सिलेक्शन कमिटी में लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, इस सिलेक्शन कमिटी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं एंड इस सिलेक्शन कमिटी में एक और यूनियन मिनिस्टर होते हैं विच इज अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एज वेल. तो जजमेंट ने ये बोला था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो प्रेसिडेंट के एडवाइस पे अपॉइंट होते हैं उसमें चीफ जस्टिस भी होने चाहिए एंड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के ऑपोजिशन लीडर भी होने चाहिए. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा कि जितने ज्यादा इसमें हम डाइवर्स लोग को ला सके उतना ज्यादा एक ऑनेस्ट और न्यूट्रल प्रोसेस हम बना पाएंगे ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द कंट्री बिकॉज it's important to conduct free and fair elections in a democracy. Election Commission of India की अगर आप बात करो तो it's an constitutional authority, autonomous constitutional authority, जो कि यूनियन के जो सेंट्रल इलेक्शंस होते हैं या स्टेट इलेक्शन प्रोसेस होते हैं उनको गवर्न करता है. अच्छा, किसी को पता है कि
कॉन्स्टिट्यूशनल वोटर्स डे या नेशनल वोटर्स डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? दिस इज टू रिकॉग्नाइज द ऑफिस ऑफ द सीईसी। 25 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे। सबसे पहले हमने 1950 में ये सेलिब्रेट किया था। अच्छा, और ये जो कमीशन है इसका, द चीफ इलेक्शन कमीशन, इसका सेक्रेटेरिएट इज इन न्यू दिल्ली। सो ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। 25 जनवरी बीइंग द नेशनल वोटर्स डे, सेक्रेटेरिएट बीइंग इन न्यू दिल्ली, एंड इसके जो मेंबर्स होते हैं, मतलब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, दे आर अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मेनी इयर्स? दे आर अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years और द एज टिल द एज ऑफ 65। अगर 65 के हो गए और 4 ही साल कंप्लीट हुए तो भी रिटायर होना पड़ता है, वरना आप 6 साल तक सर्व कर सकते हो। तो दैट इज व्हाट इज द बैकग्राउंड, द स्टैटिक पार्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड द इलेक्शन कमिश्नर। अब 1989 तक क्या होता था, ये एक सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, यानी कि सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। बट 1989 में एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसके थ्रू दिस बिकेम अ मल्टी मेंबर बॉडी। अब मल्टी मेंबर बॉडी है तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि फिर अब इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द इलेक्शन कमीशन, द चीफ इलेक्शन कमीशन? हाउ मेनी मेंबर्स? Okay, Tenma says 3. Everyone says 3. Well, you guys are partly correct. Partly correct why? Because the number is flexible. The number is decided by the President of India based on what are the needs and requirement of the country. Currently, the number is 3. So you guys are partly correct. But the right answer to this is decided by the President and currently this is 3. ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा नीश इंफॉर्मेशन है, बट हाँ, एज लॉ स्टूडेंट्स आपको ये सब पता होना चाहिए। So yeah, this is the background. The salaries and all of those terms and conditions are similar to Supreme Court judges. इनका अपॉइंटमेंट भी उसी तरीके से होता है, इनका इम्पीचमेंट भी सुप्रीम कोर्ट जजेस की तरीके से होता है। ये सैलरी भी उतनी ड्रॉ करते हैं जितना एक सुप्रीम कोर्ट का जज ड्रॉ करता है। एंड इसमें एक लैंडमार्क केस, चलो वो ज्यादा हो जाएगा, केसेस वेसेस नहीं करते हम। इतना इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी है विद रिगार्ड्स टू चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इट्स ऑफिस। तो अब इसमें अभी आगे चल के देखेंगे हम कि पार्लियामेंट का जो लॉ है वो प्रिवेल करता है या फिर कोर्ट का जो जजमेंट है उस पर आर्टिकल 141 वो प्रिवेल करता है। सो दिस वुड बी एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। Okay, moving ahead to the next topic, which is the river interlinking project, the Kane Betwa project, and why this is being called as a disaster from an environmental perspective. सबसे पहले ये project बनाया क्यों गया? Why is the government making such a project? This is to fight the river scarcity in the Bundelkhand region. Bundelkhand region is your UP-MP का border region, right? एंड वहां पे जो है थोड़ा से ड्रॉट लाइक सिचुएशंस हैं इन द बेतवा रिवर। तो केन रिवर में सरप्लस पानी है, बेतवा रिवर में कम पानी है। तो आइडिया ये सोचा गया कि चलो क्यों ना केन रिवर का पानी बेतवा रिवर में ट्रांसफर कर दिया जाए। अच्छा, केन एंड बेतवा रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? कैन यू गाइस टेल मी? दीज रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? तो ये जो रिवर प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं इसमें हम ऑब्वियसली डैम्स भी कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड अ मेजर डैम वुड बी कंस्ट्रक्टेड व्हिच इज in the vicinity of the Panna Tiger Reserve, which is raising a concern about its submergence. Submergence मतलब पानी में डूब जाना, फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाना। अब इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें, पुरानी इसकी स्टोरी समझें कि ये इंटर बेसिन ट्रांसफर या इंटर रिवर ट्रांसफर स्टार्ट कब हुआ, ये आइडिया कहाँ से आया। सो दिस आइडिया इज 130 years old and there was a gentleman called Sir Arthur Cotton. सर आर्थर याद रख लो, उतना काफी है। हु डिजाइन्ड दिस इरिगेशन डैम का कंसेप्ट इन द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर वैली, कि एक रिवर से दूसरे रिवर पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं पानी। एंड देन धीरे धीरे करके इस पे डेवलपमेंट हुआ एंड नेशनल वाटर ग्रिड का एक कॉन्सेप्ट हमने बनाया जिसमें हम इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज इसको गवर्न करती है, जहाँ पे हम सरप्लस पानी को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम सरप्लस रीजन्स टू डेफिशिएंट रीजन्स। सेंट्रल और सदर्न इंडिया में काफी इस तरीके के स्कीम्स हैं हमारे, जिसमें हम पानी ट्रांसफर करते हैं गंगा से या ब्रह्मपुत्र से, विच आर वेरी वाटर सरप्लस सॉर्ट ऑफ रिवर्स। सो yes, Yamuna is the right answer. No, Ganga is not the right answer. The right answer is Yamuna. Kane and Betwa are tributaries of the Yamuna river.
नॉट द गंगा रिवर। तो मैं आपको बता रहा था कि एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से ये हार्मफुल है, क्योंकि दिस वुड फर्स्टली डिसरप्ट द फ्लो ऑफ द रिवर, सेकेंडली कॉज डैमेज टू द पन्ना टाइगर रिजर्व, वहां पे एक घड़ियाल रिजर्व भी है, उसको भी ये जो है डैमेज पहुंचाएगा। एंड उसके अलावा ऑब्वियसली देर आर फैमिलीज एंड देर आर पीपल, देर इज लाइवलीहुड विच वुड बी डिसरप्टेड। तो उसी वजह से ये बहुत ज्यादा एक चैलेंज क्रिएट हो गया है कि वेदर दिस डेवलपमेंट इज कमिंग एट द राइट कॉस्ट और नॉट, बिकॉज क्रिएटिंग सच अ प्रोजेक्ट इज नॉट वन डेज प्ले, और ऐसा नहीं है कि 10-20 रुपए में बन जाता है। द कॉस्ट, द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 5.5 लाख करोड़ रुपीज। सो दैट्स नॉट अ पेटी अमाउंट। एंड इसमें फिर सोशल कॉस्ट इन्वॉल्व है, एनवायरमेंटल कॉस्ट इन्वॉल्व है, ऑपरेशनल कॉस्ट इन्वॉल्व है, बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व है। एंड आपका जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है, उसने ऐसे 30 लिंकेजेस आइडेंटिफाई किए हुए हैं। 14 आर इन द हिमालयन रीजन, 16 आर इन द पेनिनसुलर रिवर रीजन, आपके सेंट्रल इंडिया एंड सदर्न इंडिया में। एंड उसमें से ये पहला प्रोजेक्ट है, द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, आउट ऑफ द 30 प्रोजेक्ट्स जो हमने आइडेंटिफाई किए आफ्टर अ सर्वे विच वाज डन इन 1982 एज पर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। सो यही सारा पूरा कॉन्सेप्ट है कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इंडिया का पहला इनिशिएटिव होगा अंडर द एनपीपी, जो हमने 1980 में बनाया। एंड अब इसका फाउंडेशन स्टोन ले डाउन हो चुका है। केन रिवर आपकी एमपी में है एंड आपकी बेतवा रिवर इज इन यूपी, एंड ये दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना रिवर की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसको हम पहले भी काफी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। लेट्स टॉक अबाउट द राइट टू फूड एंड द स्ट्रगल विद पीडीएस। तो राइट टू फूड इज अ फंडामेंटल राइट विच इज कवर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड पीडीएस इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये आर्टिकल बात करता है कुछ रिपोर्ट्स के बारे में, जो रिपोर्ट्स बताती हैं कि a lot of households have been removed from the roles of the public distribution system. Primarily this article talks about 3 different states. ये कह रहा है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ झारखंड और ओडिशा तक सीमित नहीं है। This is a problem which is prevalent to a great extent in the state of Bihar as well. So basically ईस्ट सेंट्रल रीजन जो है एक पीडीएस ट्रेजेडी के थ्रू जा रहा है, जहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लिया है पटना डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पे एक और स्पेसिफिक आई वुड से सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी का इन्होंने एग्जांपल लिया, विच इज द मूसाहार हाउस होल्ड्स, जहाँ पे इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि दे डू नॉट इवन हैव एन एक्टिव राशन कार्ड। एंड द प्रॉब्लम इज, अगर राशन कार्ड है भी तो उसमें सारे फैमिली मेंबर्स जो है एनरोल्ड नहीं है। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं जो एक्सेस लूज कर चुके हैं अपने राशन कार्ड का। बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बाय द फेयर प्राइस शॉप्स जो गवर्नमेंट सेटअप करती है, जहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइसेस पे ग्रेन्स या फिर फूड सप्लाईज मिलते हैं। बहुत सारी जगह पे देर इज सिस्टमैटिक करप्शन, जहाँ पे लेट्स से अगर 5 kg ऑफ ग्रेन हैज बीन एलोकेटेड, जिसमें 2 kg राइस रहेगा, 2 kg वीट रहेगा, 1 kg कुछ और रहेगा, वहां पे ऐसा चल रहा है कि सिर्फ 4 kg दिया जा रहा है और सिर्फ राइस दिया जा रहा है, विच इज ऑल्सो ऑफ द लोएस्ट क्वालिटी। द आर्टिकल मेंशंस द नेम, इट्स ऑफ उसना क्वालिटी, विच इज द लोएस्ट क्वालिटी ऑफ राइस विच इज बीइंग ऑफर्ड। तो वो जो एक्चुअल ग्रेन्स जो गवर्नमेंट दे रही है वो जा रहा है ठेकेदारों की जेब में, एंड वो उसको बेच के पैसा कमा रहे हैं। And that is a big problem in the public distribution system. So इसको कैसे डील करना है, that is what this article is addressing, that the government needs to firstly be aware of the systematic flaws, and then they have to bring change on the ground root level by checking whether the infrastructure which is required to implement such a large scale scheme is in place or not. क्या लोगों के पास राशन कार्ड वगैरह है, क्या लोगों को एक्सेस मिल पा रहा है उन फैसिलिटीज का जो आपने प्रोवाइड करी है। Because this is all in context with जो आपने एक legislation बनाया, which is called the National Food Security Act of 2013. ऑब्जेक्टिव क्या था उसका? ऑब्जेक्टिव सिंपली यही था कि आप सबको प्रोवाइड करो एक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, एक फूड सिक्योरिटी, एक एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी फूड विच इज एट एन अफोर्डेबल प्राइस फॉर पीपल टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। ऐसा ना हो कि लोग भूखे मर रहे हो, भूखे सो रहे हो, इवन आफ्टर बीइंग फूड सफिशिएंट एज अ कंट्री। सो ये जो एक्ट है ये कवर करता है अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ योर रूरल पॉपुलेशन को, लगभग 50% ऑफ योर अर्बन पॉपुलेशन को, जिनको ये सब्सिडाइज्ड ग्रेन्स दिए जाते हैं एज पर आवर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एंड दिस कवर्स ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ योर पॉपुलेशन, यानी कि 66-67% पॉपुलेशन को ये आपकी पीडीएस सिस्टम टारगेट करती है, विच इज अ बिग बिग नंबर। अब इसमें और भी बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स चलती हैं, जैसे अंत्योदय अन्न योजना चलता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलता है। तो इसके
इसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट आपके इनिशिएटिव्स हैं, जैसे अंत्योदय अन्न योजना की अगर हम बात करें तो उसमें 35 kg ऑफ फूड ग्रेन मंथली का प्रोविजन है फॉर एवरी हाउस होल्ड। अगर आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करो तो वो कोविड टाइम पे स्टार्ट हुई थी 2020 में एज अ रिलीफ मेजर, एंड उसके अंदर 5 kg ऑफ फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ का प्रोविजन था। बट जो कि मैं आपको बता रहा था कि लोगों को वो नहीं दिया जा रहा, वो नहीं मिल रहा लोगों को जो कि प्रॉमिस किया गया था अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम्स, एंड दैट इज व्हाई दिस हैज बिकम अ मेजर इशू एंड द गवर्नमेंट नीड्स टू work out a solution to solve this problem, and that is what this article is all about। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। Let's talk about the next article, which is how the UAPA, a draconian law, is wrecking lives. So UAPA सबसे पहले होता क्या है? UAPA is your Unlawful Activities Prevention Act, usually terrorism related activities। जब कि हम बात करते हैं तब हम UAPA की बात करते हैं, हम टाडा की भी बात करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज डिटेंशन एक्ट। एंड UAPA आया कब था? UAPA was introduced in the year 1967। मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए, 1967 का ये लेजिस्लेशन है, एंड इसके ऑब्जेक्टिव सिंपल है। दिस इज बेसिकली टू पुट आउट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन योर फंडामेंटल राइट्स। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। कोई मुझे बता सकता है कौन से आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट दिस? Ravi is saying, how is Christ Law School? It's good. It's a good law school. Article 19 is the correct answer. Absolutely right. So Article 19, one of the Constitution specifically talks about freedom of speech and expression. And UAPA कहता है कि किन किन केसेस में आप जो है restriction लगा सकते हो। Sorry, restrictions जो है 19(1) में है। आपके आर्टिकल 19 आपका बताता है कि क्या क्या आपके फ्रीडम्स हैं, एंड बेसिकली जो एक्टिविटीज इसमें हम कवर करते हैं आर अनलॉफुल एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज, उनकी फंडिंग, उनकी कमिश्निंग, उनकी सपोर्ट। सो ड्रैकोनियन लेजिस्लेशन क्यों बोला जाता है इसको? बिकॉज इसमें जो डेफिनेशन है ना अनलॉफुल एक्टिविटी की वो बहुत ज्यादा वेग है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जो कि मोस्ट केसेस में यहाँ पे NIA होती है, कि हाउ डू दे डिफाइन द अनलॉफुल एक्टिविटी। जो एक्ट में डिफाइंड है वो कहता है कि इट इज डिफाइंड एज एनी एक्शन टेकन बाय एन इंडिविजुअल और एसोसिएशन थ्रू एन एक्ट, वर्ड्स स्पोकन और रिटन, और बाय साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन विच इज इंटेंडेड टू or supports a claim to bring about cession of a part of a territory of India or the secession of a part of territory of India from the Union, or which incites any individual or group of individuals to bring about cession or secession। अब सेशन और secession क्या होता है सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। बेसिकली अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो, बोलते हो, इशारा करते हो, किसी को भड़काते हो जिससे देश की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को खतरा है, यानी कि आप लोगों को पता नहीं याद हो या ना हो, 2020 में वो बहुत डायलॉग वगैरह चले थे इस बात के, टुकड़े टुकड़े गैंग एंड भारत तेरे टुकड़े होंगे वगैरह वगैरह। तो उस टाइप के डायलॉग्स आर द डायलॉग्स विच आर covered as unlawful activities which are breaking the territorial integrity। सेशन एंड secession बेसिकली इंडिया के टेरिटरी का कोई हिस्सा अलग कर देना इंडिया से, जैसे अलग कंट्री बनाने की बात करना, या किसी और कंट्री के साथ मर्ज हो जाने की बात करना, या कंट्री का कोई टुकड़ा अलग कर देने की बात करना। तो दीज आर एक्टिविटीज विच आर क्लासिफाइड एज अनलॉफुल एक्टिविटीज। ऑफ कोर्स देयर आर टेररिस्ट एक्टिविटीज विच आर आल्सो इंक्लूडेड। अच्छा, इनिशियली जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं मेंशन थी 1967 वाले एक्ट में। टेररिस्ट एक्टिविटीज का मेंशन सबसे पहले आया 2004 में। 2004 में यूएपीए को हमने अमेंड किया, एंड तब टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी हमने इसके परव्यू में लेके आए, जिसमें हमने काफी सारे टेररिस्ट आउटफिट्स को आइडेंटिफाई किया, स्पेसिफिकली 34 आउटफिट्स को आइडेंटिफाई किया, जिसमें लश्कर तैयबा वाज देयर, जैश ए मोहम्मद वाज देयर, एंड वी बैंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस एंड टेरर आउटफिट्स। अब ये वाली एक्टिविटीज को हम बैन इसलिए करते हैं बिकॉज वी बिलीव दैट दे कैन डिसरप्ट द सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड कैन कॉज डिसअफेक्शन इन द माइंड्स ऑफ पीपल। एंड टेररिस्ट की क्या डेफिनेशन होती है, हाउ डू वी क्लासिफाई अ टेररिस्ट, वो सारा भी इस एक्ट में डिफाइंड है। एंड आप एक इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित कर सकते हो, दैट केम थ्रू एन अमेंडमेंट अगेन विच वाज इन 2019। 2019 में हम एक अमेंडमेंट लाए विच गेव द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी द पावर टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट। जैसे कि आप मान लो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ना, आप बोल सकते हो कि हाँ ये बंदा टेररिस्ट है, मुझे लगता है ये टेररिस्ट है, अंडर दिस यूएपीए।
अब यूएपीए में पंगा ये आ जाता है कि यूएपीए में प्राइमा फेसाई अगर आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है ये प्रूव करने की कि आप टेररिस्ट नहीं हो, तो आपको बेल नहीं मिलेगी। आपको प्राइमा फेसाई बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा कि आपने कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करी है। That means the onus is on you, the burden of proof is on you rather than on the prosecution, जो कि यूजुअली होता है इन क्रिमिनल लॉ मैटर्स। यहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप क्यों टेररिस्ट नहीं हो। और इसमें ऑब्वियसली देर आर हाई क्वांटम ऑफ पनिशमेंट्स, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है, डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट है। इसमें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को भी जल्दी एक्ट करना पड़ता है, विद इन 180 डेज चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स इट कैन बी एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, बट हाँ, दैट इज व्हाट makes this legislation a little bit of draconian in nature। यहाँ पे काफी ज्यादा पावर्स दी गई हैं नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, एनआईए को, एंड कोई भी जो एनआईए का इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर का ऑफिसर है वो इसमें पूरा आपका इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवा सकता है, एंड यूजुअली इसमें बेल बहुत मुश्किल से मिलती है। तो यही आर्टिकल बात कर रहा है कि जो उमर खालिद वाला केस था उसमें बेल नहीं मिल रही है, एंड हाउ ही हैज बीन लैंग्विशिंग इन द जेल विदाउट अ प्रॉपर ट्रायल। तो उन लोगों का ट्रायल भी नहीं हो रहा, उनको बेल भी नहीं मिल रही, वो बस जेल में पड़े हुए हैं वैसे के वैसे। दैट इज व्हाई दिस इज बीइंग कॉल्ड एज अ ड्रेकोनियन लॉ और अ इविल लॉ। And yeah, that's what this article is all about. Moving ahead to the next article. Okay, we are 4 articles only. ठीक है, चलो vocabulary कर लेते हैं हम आज की। The first vocabulary word for the day is tranquil. Tranquil का मतलब होता है free from disturbing noise or uproar, एकदम शांत, ठंडा, ठंडा तो नहीं, शांत, calm, quite peaceful, serene. That is what is meant by tranquil. ठीक है। The house was once again tranquil after the kids moved outside to play. Antonyms हो गए इसके loud, boisterous, tumultuous। यहाँ पे बहुत शोर गुल्ला हो रहा है, ये हो गए antonyms। Next word is arrant. Arrant मतलब होता है पूरे तरीके से, having no exceptions or restrictions, completely, utter, complete, absolute. He is talking arrant nonsense, यानी कि complete nonsense, total nonsense. Antonyms हो गए इसके doubtful, uncertain, questionable। And the third word and the final word for the day is avaricious. Avaricious मतलब होता है having or marked by an eager and often selfish desire, especially for material possessions. आसान भाषा में हिंदी में बोले तो लालच। Synonyms are greedy, mercenary, eager. Antonyms are generous, liberal, altruistic. He sacrificed his own career so that his avaricious brother could succeed. ठीक है? So avaricious meaning greedy. First word, arrant meaning complete or absolute. Tranquil meaning quiet and peaceful is the third word for the day. And that brings us to the end of today's Hindu analysis. What is the difference between UAPA coverage and TADA coverage? See, both are legislations which talk about terrorist activities. I think TADA has now either been merged into UAPA or has been repealed. Let me just quickly check it out for you. यस, दैट्स करेक्ट। जो मैं आपको बता रहा था कि यूएपीए अब जो है प्राइमरी लेजिस्लेशन बन गया अगेंस्ट एंटी टेररिज्म, एंड इट हैज रिप्लेस्ड द टाडा एक्ट एंड द पीओटीए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट एंड टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट। ये दोनों रिप्लेस कर दिए गए हैं बाय द यूएपीए। ठीक है, सो या दैट इज द केस। Okay, ji, chalo. So that brings us to the close of this particular session. Thank you so much for participating. Keep learning, keep preparing. I'll see you all in another session tomorrow. Till then, bye bye. Take care. Then my saying how to eliminate the topic in Manthan or Manthan 2.0 that are not important. So we'll talk about this in tomorrow's session. ठीक है, कल इस बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। Thank you so much, guys. Signing off. Bye bye.